Assalamu alaikum. This is Dr. Shafiq Cheema. Thank you for the opportunity to talk directly to such an esteemed group of experts. We not only want to start but sustain the kidney early evaluation program in Pakistan and need your input in this regard. I will be briefly talking about these to make my point. As you know, 850 million people globally, around 10% of the world's population have chronic kidney disease. But around 90% don't even know because it's asymptomatic at early stages. As a result, end-stage kidney disease as well as dialysis population is increasing rapidly. Currently, the dialysis population in the world is around 5 million. What we see is just the tip of the iceberg. And globally, as well as in the US, it's projected to increase as the third fastest cause of death. If we spend billions of dollars like US for end stage renal disease, then we need billions of dollars. And in terms of Pakistan, I think all Pakistani adults are at a risk of chronic kidney disease. But we can't screen everyone. So we will be screening the highest risk factors like people with diabetes and hypertension. So in Pakistan, 1 in 3 have diabetes and 1 in 3 have hypertension, making the total cases of chronic kidney disease almost 400 million. So the prevalence, according to some small studies, is almost 30%. And we did a study in Lahore by the name of Keep Lahore. And based on that study, the prevalence was found out to be almost 24 to 25%. That means 1 in 4 have chronic kidney disease. And if we do not detect this disease at early stages, we will find 90% of the cases at stage 4 and 5, where it's difficult to treat. So the question arises, why bother to screen? There are so many challenges. For example, we have poor health funding. There is a significant burden of communicable diseases. The testing for some people could be high in terms of cost. And there is lack of local data for policy making, and we have limited resources. Uh, I would like to make the case for early detection since the prevalence, especially in the lower middle income countries, is as high as more than 35%. So screening is the only cost effective way moving forward. 80% burden of CKD occurs in lower middle income countries. And awareness is extremely poor. Only 10% know they have chronic kidney disease. So early detection enables timely intervention during the reversible phase. So we could not only reduce morbidity, mortality, healthcare costs, but also cardiovascular risk reduction, and we could improve the survival. And there are so many other benefits for early screening. The question also arises, why now? Because we have better understanding of the disease. We have more drugs available. We understand that if we protect the kidneys, we are protecting the heart as well. Albuminuria in itself is a risk factor for kidney disease. We used to have only one drug. Now we have like almost four drugs, so which could significantly decrease the cardiovascular as well as renal related mortality and morbidity. There was recently a flow trial which indicated 24% reduction in cardiovascular as well as renal outcome in terms of primary composite outcome. So that was all the effect of semaglutide, which is a newer kid in the block. So we all understand the highest risk population which was used in flow trial. It was high risk for the progression of kidney disease as well as for their cardiovascular death. So by reducing the risk of renal disease progression by detecting it early, we could decrease the cardiovascular morbidity and mortality. This is an older diagram, but if you look at it, stage 3, we have like 6 to 7 million
people. But stage 4, because of the cardiovascular death, there are only less than million people left. Then we all talk about the return on investment. So in Australia, they did a study on early detection, and they figured out that if we invest in early detection, we could yield a net benefit of $10 billion over the subsequent 20 years. Uh, in simple words, if you spend $1 on screening or early detection, you save $45. So I think we need to start kidney early evaluation program in Pakistan. We have officially launched this program recently in Lahore. Keep Pakistan healthy, keep your kidneys healthy. We will be focusing on the primary prevention, like prevention of the risk factors of the kidney disease, like prevention of diabetes and hypertension. Then comes the secondary prevention, early detection and treatment of chronic kidney disease. It's need of the hour in the lower middle income countries. And sometime when we will be doing the detection, we will detect the kidney disease, but in little bit later stages. But if we apply all the new drugs, including semaglutide, we could significantly delay the progression of kidney disease. And we would be following the International Society of Nephrology's model, the roadmap to build transparent partnerships, funding, collaboration with PSN, ISN, Gohar Ejaz Foundation, Pak Kiney Foundation. And then we will be raising several questions in terms of what is our true burden of kidney disease, what screening tests we will be using in the high risk population. Can we use different surveys? Should we use only one test or two tests together? Because there are some people say urine dipstick could screen the kidney disease, but there are many false positive and false negatives. There are some surveys available according to which no test is required. So based on this survey, if someone scores more than 4, they have 1 in 5 chance of chronic kidney disease. And you could also contribute to keep Pakistan healthy program by spreading the awareness about kidney disease, by encouraging others to get screened for chronic kidney disease, by sharing leads and connecting us with partners and professional societies and policymakers, by giving your time, by providing support. We could try to have different labs and hospitals to become key Pakistan healthy screening sites. We could utilize medical students. We could do a mini fellowship for family physician and internal medicine doctors so that the burden on nephrologists decreases. I'm already spreading awareness through my YouTube channel. We could also have pre-recorded greeting messages about kidney disease, especially in the month of March, which is a kidney month. And we could also collaborate with Punjab Health and Population Department. And if they support this and they spend as little as 5% of the Sehat Surat program on prevention, that could make a difference. They could help us negotiate low rates for kidney screening panel, just like dengue CBC. If you could get kidney screening for 200 rupees, then people would love to do it. Uh, to summarize, I would say this disease is detectable easily in early phase, where it could be better treated or reversed. And we should ask policymakers to use healthcare resources to improve kidney health in Pakistan. With that, I would like to thank you all, and especially these organizations, Gohar Ejaz Foundation, PSN, Punjab Health Department, Family Physicians, Kidney Beyond Borders, Pakistan Society of Internal Medicine, Chughtai Lab, IMC Diagnostic, Feroz Sons and Pak Kidney Foundation for their help and support. To summarize the whole presentation, I have a small video. So I would like all of you to just enjoy this short video about our kidney early evaluation program. And thank you very much for watching. लोग गुर्दों की दायमी दुनिया भर में करोड़ों लोग
गुर्दों की दायमी बीमारी क्रॉनिक किडनी डिजीज या सीकेडी का शिकार है। ये बीमारी साइलेंट किलर है, खामोशी से वार करके आपको गुर्दों की सेहत से महरूम कर देती है। पाकिस्तान में हर साल 25,000 लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। हर 4 में से एक शहरी सीकेडी का शिकार है और 90% को इसका एहसास तक नहीं। हमारे यहाँ वसाइल महदूद है, तशखीस देर से होती है और इलाज पहुंच से बाहर। आई एम डॉक्टर नईम, 68 ईयर्स ओल्ड, और मुझे काफी अरसे से तकरीबन 35 या 40 ईयर्स ब्लड प्रेशर था। उसकी मैंने केयर नहीं की प्रॉपर, उसकी मेडिकेशन नहीं ली, जिसने आहिस्ता आहिस्ता किडनीज को डैमेज किया। फिर मेरी किडनीज जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो हाफ से ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई उसकी इंडिकेशन नहीं थी कि मेरी किडनीज डैमेज हो रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस स्टेज पे पहुंच गई कि ये अब मुझे होमोडायलिसिस पे आना पड़ा। मैं मैसेज जरूर देना चाहूंगा सबको कि जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं वो अपनी स्क्रीनिंग जरूर करवाएं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग लेट प्रेजेंट करते हैं, यानी जब उनको पहली दफा हम डायग्नोज करते हैं तो उनकी क्रिएटिनिन 6-7 पे होती है। उनको उस वक्त स्टेज 4 और 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी होती है। इस वक्त जो भी इलाज है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता और उनके गुर्दे फेल हो जाते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि उन्हें ये पहली दफा पता चला है, उनको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज बहुत अरसे से चल रही होती है, लेकिन उन्होंने कभी उसके टेस्ट ही नहीं करवाए होते क्योंकि गुर्दे की बीमारी की अलामत कोई होती नहीं है। तो जब टेस्ट नहीं होते, बाय द टाइम दे गेट टू नो इट, उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। मेरा तो ख्याल है कि क्रॉनिक किडनी डिजीज चूंकि खामोशी से वार करती है, तो ये एक ऐसा बुहरान है जो हमारे घरों को, खानदानों को और आने वाली नस्लों को तबाह कर रहा है। मेरा नाम अजहर है, मैं जना हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ। 3 साल पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था वहाँ पे, तो मैंने भी अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लिया। स्क्रीनिंग टेस्ट में शुगर भी ज़्यादा ही थी और पेशाब में प्रोटीन भी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मेडिसिन इस्तेमाल करवाई। तो अब 3 साल गुजर गए, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी बहुत अच्छी है और पेशाब में प्रोटीन भी कम हो गई है। ये कोरोना टाइम पे हमने कीप लाहौर किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम लॉन्च किया जना हॉस्पिटल में। उसके लिए हमने लोगों को स्क्रीन किया। तो अजहर वाज वन ऑफ देम। अजहर को कुछ पता नहीं था कि इसको कोई मसला है कि नहीं। उसी स्क्रीनिंग में पता चला कि इसको तो डायबिटीज है और प्रोटीन यूरिया भी है, इसके यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आ रही है, इसकी HbA1c वाज अराउंड 8। इसको हमने फिर एंटी डायबिटिक मेडिकेशन शुरू कराई। अब बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं डायबिटीज की जो गुर्दों की भी हिफाजत करती हैं। वो दवाई शुरू करने से क्या हुआ, इसकी डायबिटीज तो बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई और साथ ही साथ चूंकि अर्ली स्टेज में था, प्रोटीन यूरिया भी बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये 3 से 4 साल हो चुके हैं और इसके यूरिन में कोई प्रोटीन नहीं आ रही, इसकी क्रिएटिनिन नॉर्मल है, इसका GFR नॉर्मल है, इसकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल है। तो हम ऑलवेज रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को जो हाई रिस्क हैं, जैसे जिनको डायबिटीज है या हाई ब्लड प्रेशर है या फैमिली हिस्ट्री है या उनकी एज मोर देन 60 है, वो अपना गुर्दों का अर्ली डिटेक्शन का स्क्रीनिंग का टेस्ट जरूर करवाएं। और ये टेस्ट बहुत सिंपल है। आप सिंपल एक ब्लड टेस्ट करेंगे क्रिएटिनिन चेक करने के लिए, जिससे आप GFR कैलकुलेट करेंगे, और दूसरा आप स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, उससे पता चलेगा कि आप अपने पेशाब में कोई एब नॉर्मल प्रोटीन तो नहीं लीक कर रहे। क्योंकि मेजॉरिटी डिजीजेज में ये अर्ली साइन होता है किडनी डिजीज का। अगर इसको आप इस वक्त पकड़ लेंगे तो जैसे वो कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो इसी वक्त यू कुड निप द इवल इन द बड और उसको आप डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। अगर लेट स्टेज में पेशेंट प्रेजेंट करता है तो फिर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। तो मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं जनूबी पंजाब डेरा गाजी खान के रहने वाला हूँ। मुझे 10-12 साल से गुर्दों की बीमारी थी। फिर एंड में आके गुर्दे फेल हो गए हैं। फिर हमारा ऑपरेशन भी कोई नहीं कर रहा था। फिर हम इधर डॉक्टर शफीक साहब के पास आए हैं। फिर इन्होंने हमारा ऑपरेशन भी फ्री करवाया। जो ट्रांसप्लांट के बाद दवाई होती है वो बहुत ही महंगी होती है। PKF ने हमसे वायदा किया है कि वो भी हम सारी जिंदगी के लिए आपको फ्री में देंगे, जिसको खा के मैं अपने बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार सकूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ PKF का, डॉक्टर शफीक चीमा साहब का। ये जंग जो है अगेंस्ट क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये हम हारे नहीं हैं। हम इस जंग को जीत सकते हैं अगर गुर्दे की दायमी बीमारी की हम अर्ली डिटेक्शन कर लें। इसलिए हम लॉन्च कर रहे हैं किडनी अर्ली इवैल्यूएशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत आपकी अर्ली स्टेज में स्क्रीनिंग हो सकेगी
और ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली पाक किडनी फाउंडेशन इसको लॉन्च कर रही है फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। और इसके साथ साथ हमें पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, गौहर एजाज फाउंडेशन और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हमें हेल्प करे तो हम ये फाइट अगेंस्ट किडनी डिजीज जीत सकते हैं। बीमारी को अर्ली स्टेजेस में पकड़ के उसको रिवर्स कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के गुर्दे फेल होने से बचा सकते हैं। पाक किडनी फाउंडेशन इस बीमारी का इब्तदाई स्टेज में तशखीस और इलाज करके अपने मुल्क और कौम के शहरियों को सेहत की दौलत से माला माल करना चाहती है। CKD के खिलाफ इस जंग में हमारा साथ दे, पाकिस्तान का साथ दे। कीप पाकिस्तान हेल्दी, कीप योर किडनीज हेल्दी। So with that, thank you all for listening, and especially Feroz Sons for giving me the opportunity to spread my message and enjoy rest of your activity. Thank you very much.